तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हमारा 7:30 से 8:30 हिंदी सेशन होता है, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। तो और जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच अपने 5 साल कंप्लीट होने पे ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहा है कोचीन केरला में, ताज विवांता में। काफी सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां भाग लेके इस प्रोग्राम को ग्रैंड सक्सेस बनाइए। मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है आईएफपीएच को मॉनिटरली। लेकिन जो लोग पहुंच सकते हैं, जो लोग जा सकते हैं, तो जरूर इस इवेंट को अटेंड करिए। बढ़ते हैं आज की सेशन की ओर। आज का जो हमारा सेशन है, हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर रोहित श्रीवत्सन। डॉक्टर रोहित का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रोहित, वेलकम तो आईएफपीएच। और डॉक्टर रोहित का एक इंट्रो देना चाहूंगी मैं। ये बीएचएमएस एमडी हैं और पिछले 15 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका विक्ट्री होम्यो स्पेशलिटी क्लिनिक के नाम से बैंगलोर में क्लिनिक है, 2 क्लिनिक्स हैं इनके। और ये मेडिकल डायरेक्टर भी है सीआर होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन, एम्फसाइजिंग ऑन हाइपोथायराइड एंड डायबिटीज मेलाइटिस। इन्होंने काफी सारा काम किया है होम्योपैथी में। और ऑटिज्म, एडीएचडी, डिलेड स्पीच, बेड वेटिंग, हियरिंग इम्पेयरमेंट पेपर्स प्रेजेंट किए हैं अलग अलग कॉन्फ्रेंस में। गोल्ड स्टोन ट्रीटमेंट थ्रू होम्योपैथी एट 22nd ऑल इंडिया होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार एट औरंगाबाद। फाइब्रो एडिनोमा ट्रीटमेंट थ्रू होम्योपैथी एट एचएमआई सेमिनार एट बेगूसराय है, बिहार। और बहुत सारे काफी अदर पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं। तो आज का जो डॉक्टर रोहित का टॉपिक है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म में होम्योपैथी से हम किस तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस को मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर रोहित अपना आज सेशन करेंगे। तो डॉक्टर रोहित, आप स्टार्ट कर सकते गुड इवनिंग, प्रणाम सबको। तो मेरा नाम है डॉक्टर रोहित श्रीवत्सन। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इधर बैंगलोर. आई हैव 2 clinics. आई एम अ थर्ड जनरेशन होम्योपैथिक डॉक्टर. सो माय ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, माय फादर डॉक्टर एम आर श्रीवत्सन, एंड आई एम डॉक्टर रोहित. आई एम बीन प्रैक्टिसिंग नाउ सिंस 15 years से. तो शैल आई शेयर माय पावर पॉइंट? हैं डॉक्टर रोहित। और आप प्लीज हिंदी में बोलिएगा प्लीज। हाँ जी सर. इट्स सबको दिख रहा है ये? हाँ जी, बिल्कुल। ओके. तो आज का टॉपिक हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. तो शुरुआत करेंगे. तो थायराइड इज लाइक आवर बॉडी का इंजन की तरह है. तो अवर पूरा बॉडी का पूरा फंक्शनैलिटी, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सब बॉडी के जो भी फंक्शंस होगा, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इनफर्टिलिटी, बॉडी की वेट, ग्रोथ, सब चीज के लिए थायराइड जरूरी होता है. ये थायराइड एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है. इट्स एट द सेंटर ऑफ आवर नेक. मगर जब ये बॉडी का इंजन, मैं क्यों ये इंजन बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म मैनेज करता है. तो एक मशीन का इंजन बहुत जरूरी है, तो थायराइड भी बहुत जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए. अगर ये इंजन थोड़ा कम तेज में चलने लगा तो मशीन इज नॉट फाइन, तो खराब हो जाएगा. तो सिमिलरली थायराइड, जब द फंक्शनिंग या फिर हार्मोन लेवल, थायराइड हार्मोन लेवल जैसे कम होता जाएगा, बिकॉज ऑफ कॉजेस, हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे आगे स्लाइडों में. व्हेन द थायराइड फंक्शन बिकम्स अंडर एक्टिव या फिर हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, T3 T4, तो ये इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें TSH का लेवल काफी बढ़ जाता है. और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर जाएगा. जो हमारा BMR, हमारा बॉडी मेटाबॉलिक रेट, जहाँ अपना हमारा बॉडी वेट और ग्रोथ, एनर्जी लेवल्स, थकान हो जाना जल्दी, ये सब लक्षण पाए जाएंगे थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में. और होम्योपैथी इज वन ऑफ द बेस्ट टू ऑफर अ सॉल्यूशन, ट्रीटमेंट एंड अ क्योर फॉर दिस कंडीशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म में. तो हाइपोथायराइडिज्म इज एंड होम्योपैथी, we've been able to achieve lot of success. कि बिकॉज होम्योपैथी में तो आप सब जानते हैं कि हार्मोनल दवाई में
नहीं है. सो व्हाट वी डू इज, हमारे दवाई में तो सप्लीमेंट भी नहीं है, हार्मोन नहीं है. तो वंस वी स्टार्ट आवर ट्रीटमेंट दे कैन कम आउट ऑफ मेडिकेशंस. लॉन्ग टर्म दवाई लेना जरूरी नहीं पड़ेगा, रिवर्सल हो जाता है. एंड वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस अ बेटर ट्रीटमेंट एंड जस्टिस फॉर दिस कंडीशंस ऑफ हाइपोथायरॉइड. सो टू स्टार्ट, हाइपोथायरॉइड के एनाटॉमी के बारे में, थायराइड का एनाटॉमी और जनरल फिजियोलॉजी अबाउट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द हार्मोन्स. तो हाइपोथायरॉइड में देर आर टू lobes, left and right lobe, and there is a middle में isthmus करके एक. And then the understand the physiology aspect of hypothyroid, or to understand the thyroid functioning के बारे में. तो hypothalamus से there is a hormone production, TRH hormone, that is thyrotropin releasing hormone. तो वो activates into the anterior pituitary और वहां से TSH hormone gets secreted. And from there T4 से T3 activate होगा. So we all know T3 and T4 hormones are from the thyroid gland, and T3 is the metabolic aspect of the thyroid hormone जो body में utilize होगा. So हमारा body cells and tissues T3 hormone से ही the body का functioning चलेगा. So first TRH, then it gets stimulated into TSH. From TSH, it comes into production of T4, and it gets activated to form T3. That is triiodothyronine, which is the metabolic form of the thyroid hormone, जहाँ body में utilize हो जाएगा body functioning के लिए, tissues के लिए, absorption के लिए. And this is how the physiology of it. Let's go and understand a little more on pathology aspect में कैसे चलेगा. तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म मोस्ट कॉमन फैक्टर जो हम लोग आजकल काफी केसेस देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. ये काफी केसेस में वी सी प्राइमरी, जिसमें लाइफस्टाइल ओरिएंटेड कंडीशंस होगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नॉट ईटिंग प्रॉपर फूड, स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है. एंड ऑल दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी, जिसमें टीएसएच बढ़ जाता है और T3 T4 वेरिएशन में T3 T4 काफी कम हो जाता है वैल्यूज. और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में दिस इज ड्यू टू पिट्यूटरियन हाइपोथैलेमिक फेलियर की वजह से we see other related causes, which is most commonly हम लोग देखते हैं Hashimoto's thyroiditis. तो इसमें एंटी टीपीओ, that is the value to understand how to diagnose a Hashimoto's thyroiditis. इसमें inflammatory condition of thyroid होगा and anti-TPO level, titer levels काफी ज्यादा हो जाएगा. So in this condition, where we see lot of cases where we see thyroid का TSH variations will be very high and anti-TPO values will be very high. It will be more than 500,000 values के ऊपर रहेगा. And more importantly, secondary hypothyroidism is another important factor is iodine deficiency, which is very common. I'll explain this more in detail in the further slides as well. And other factors are post-surgical radiation and other medications can lead to hypothyroidism. Coming to more important factor, इसमें जो हम लोग खाना खाते हैं और the do's and don'ts, वो बहुत जरूरी होता है एक केस में. Before we start treatment, before we start medicine, giving an important information to the patient बहुत जरूरी हो जाता है. So one thing we should know that in thyroid cases सभी बोलते हैं कॉलीफ्लावर कैबेज मत खाइए या फिर नहीं खाना है. वो तो आजकल सब पब्लिक को भी पता चल गया है, because awareness is so much nowadays कि सबको, everyone knows about hypothyroidism. People are, I mean, quite knowledgeable about it. तो अभी ब्रोकली एंड कैबेज व्हाई वी शुड नॉट ईट, बिकॉज जो बॉडी का आयोडीन विच वी ईट इन अदर सोर्सेज ऑफ फूड में जो आयोडीन आता है, दैट गेट्स यूटिलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ ब्रोकली एंड कैबेज. सो दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस व्हाई वी से ब्रोकली और कैबेज नहीं खाना है. एंड देन ग्लूटेन रिच फूड. ये ग्लूटेन रिच फूड क्या हो सकता है? ग्लूटेन रिच फूड इज आवर व्हीट रिलेटेड फूड दैट वी ईट. तो उसमें क्या हो जाता है, gluten has a very specific protein in it, which is very similar to the thyroid aspect. So in cases of Hashimoto's thyroiditis, we
should always try to educate patients को बोलना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा gluten related खाना नहीं खाना है, तो it affects, or basically it will increase the antibodies of thyroid. So we have to take care on understanding the foods that they have to avoid. Then, and we all know about the salt. तो ये बहुत जरूरी है आजकल, because nowadays I am seeing lot of patients talking about very specific salt. तो आजकल काफी चर्चे पे आ रहा है ऑर्गेनिक, पीपल आर टेकिंग पिंक सॉल्ट। पहले तो सिर्फ सेंधा नमक हुआ करता था जो खाने में यूज करते थे, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, और उसके बाद पीपल स्टार्टेड यूजिंग the table salt. The table salt, that is nothing but iodized salt. So iodized salt is very important. More than the Himalayan pink salt or the rock salt, iodized salt is very important because iodine is की वजह से थायराइड का प्रोडक्शन शुरू होता है, एंड थायराइड का प्रोडक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड आयोडीज सॉल्ट इज द इजीएस्ट फॉर्म इन विच आयोडीन आ जाता है बॉडी के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. एंड nowadays because of this organic, people have been moving on to pink salt. ये हेल्दी है, पिंक सॉल्ट लेना है, मगर पिंक सॉल्ट में आयोडीन नहीं है. आयोडीन कमी की वजह से आजकल काफी थायराइड केसेस आने लगे. So we need to educate them कि why iodized salt is very important, especially in India. If you all know, post independence के टाइम पे ये iodized salt, और उसके बाद 1984 के टाइम पे this became basically a policy where all the salt has to be iodized, and that is when Tata नमक शुरू हुआ था जिसमें iodized salt शुरू हुआ था. So काफी once that became popular, but now आजकल the trend is changed to organic. So people have been speaking and using more on iodized salt. So we need to educate the people. So वो ये बहुत जरूरी हो जाता है. Then coming to the symptoms, ये लक्षण क्या क्या आते हैं हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर. हाइपोथायराइडिज्म में मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है थकान आना, एंड बहुत सुस्त हो जाना, एनर्जी लेवल काफी कम हो जाता है, तेजी से वजन बढ़ जाता है, सडन एंड वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राई स्किन, तो त्वचा का सूखापन आ जाता है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाता है, पीरियड्स की चेंजेस होता है लेडीज में. कभी कभी पीरियड्स देर हो जाता है, डिले हो जाता है, या फिर पीरियड्स की फ्लो बहुत कम होता है, या एमेनोरिया हो जाता है, कंप्लीट स्टॉप हो जाता है, 1-2 महीने के लिए नहीं आता है उनको. तो काफी इरेगुलरिटीज होता है उनके मासिक पीरियड्स के ऊपर. एंड देन देयर विल बी स्वेलिंग, सो फुल पे पूरा फेस फूल जाता है. सो ये सब कॉमन लक्षण आते हैं हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर. दिस इज व्हाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज द हार्मोन प्रोडक्शन कम है, मेटाबॉलिक रेट कम है, तो पेशेंट बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, पेशेंट काफी लेजी हो जाते हैं. एंड दीज आर वेरी वेरी कॉमन फैक्टर्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ठंड लग जाता है, सो टॉलरेंस टू कोल्ड, but this we need to assess it very properly. Kabhi kabhi there will be, because in many a times patient will not be able to understand what is happening, so we need to explain, guide them. And काफी patients में ये all these symptoms सब नहीं रहता है, so we need to understand क्या क्या symptoms है उनमें कितना, and काफी thyroid cases asymptomatic रहता है. So that is another thing where nowadays जो cases आते हैं आजकल, एंड बिकॉज ऑफ दिस मोर अवेयरनेस, इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट्स बाय देमसेल्फ, काफी लैबोरेटरीज जाते हैं, गूगल करते हैं, दे गो टू एंड डू देयर ओन ब्लड टेस्टिंग्स वेरी रेगुलरली, व्हिच इज वेरी गुड आजकल. दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच पीपल आर अवेयर एंड दे आर गेटिंग देमसेल्फ टेस्टेड. मगर मेनी ऑफ देम इवन विथ माइल्ड वेरिएशंस, ये टीएसएच थोड़ा ऊपर नीचे होने से भी दवाई शुरू कर देते हैं, या फिर उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं रहता है, मगर anxiety of the doctor, that I will put it very clearly. Many a times क्या होता है, we have to be preserver of health. That is very important, and we need to know when we have to start medicine, when not to start medicine. But today things have been different, so everyone wants to do something. तो डॉक्टर्स क्या कर देते हैं, जल्दी दवाई शुरू कर ही लेते हैं, क्योंकि काफी केसेस में दवाई एंड जस्ट सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे मैंने बताया, थोड़ा खाने में चेंजेस या सॉल्ट, वो सब थोड़ा चेंजेस करने में ऑटोमेटिक टीएसएच तो ठीक ही हो जाता है, मगर दे स्टार्ट हार्मोनल मेडिसिन बहुत इजीली.
तो अगेन टू कम आउट ऑफ हार्मोनल मेडिकेशंस उनको वक्त लग जाता है, या फिर इन अदरवाइज द जनरल ट्रेंड इज थायराइड शुरू हो गया तो वो तो लॉन्ग टर्म नो स्टॉपिंग ऑफ मेडिकेशन ही चलता रहता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज काफी केसेस में नहीं रहता है एंड मेनी केसेस ऑफ हैशिमोटोस थायराइडाइटिस में भी. नाउ आई नाउ टू अंडरस्टैंड, मेरे चेंबर में क्लिनिक में, सो आई बीन प्रैक्टिसिंग अभी 15 साल से तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आई सी about 70 to 100 cases. So इसमें there are almost 20 cases of सिर्फ thyroid cases आते हैं. मगर ये why is this happening? Because of lifestyle, food not eating, fast food, sleep is changed. I live in Bangalore, I practice in Bangalore, and it's the IT capital. So क्या होता है, काफी engineers है, they work in different shifts. कभी कभी morning shifts होता है, एक महीना next महीना उनका afternoon या night shift हो जाता है, या आजकल नया मोड चल रहा है कि हाइब्रिड, जिसमें उनका काम चलता रहता है, 3 दिन घर में 3 दिन ऑफिस में. तो इसमें बॉडीली चेंजेस काफी आ जाते हैं, तो उनका स्लीप साइकिल चेंज होता है. तो ऑल दिस कैन लीड टू चेंजेस इन एंड फॉर्मिंग, बिकॉज दिस इज द कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स आके पूछते हैं कि थायराइड क्यों हुआ. अगर हैशिमोटोस है तो वो तो इमीडिएट आंसर पता चल जाता है कि ऑटोइम्यून है उसकी वजह से. प्राइमरी, it's a question mark. Q, because it is only because of dysfunction. Why is dysfunction? It's only because of we are ourselves causing all these issues to our body. तो उसकी वजह से, वो changes की वजह से ये hypothyroidism का symptoms लक्षण आना शुरू हो जाता है. Investigations. Now, most important in these cases of hypothyroidism में blood test. So there are T3, T4, TSH. This is the basic blood test जो करना है, and nothing that it has to be done in fasting. Many a times only during pregnancies we recommend blood test उनको fasting में करना है. And anti-TPO test, that is very specific test for to understand अगर Hashimoto's positive है या फिर नहीं. And most important scanning will be ultrasound scan. So with an ultrasound scan, we'll be able to understand thyroid का swelling अगर है, या फिर goiter है, या फिर nodules formation है, cyst formation है. So all this इसमें हम, it will help us to understand कि thyroid का size कैसा है, अगर कोई changes है, vascularity ज़्यादा है, और ये अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है. अगर goiter है या फिर नोड्यूल्स फॉर्मेशंस है, कभी कभी अगर ये बहुत बड़ा है तो इनको बायोप्सी भी रेकमेंड कर सकते हैं. तो एफएनएसी टेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें पता चल जाता है अगर इफ इट इज बिनाइन तो गॉइटर होगा, अगर अदरवाइज इट बिकम्स अ थायराइड रिलेटेड कैंसर कंडीशन होगा. Another important blood test which we need to do with thyroid patients would be to rule out anemia. Now, why we need to do these blood tests is very important, because we are homeopathy doctors, but still we need to understand and recommend these tests, क्योंकि ये tests करने से not only thyroid का वैल्यू पता चलता है, मगर इसको रेगुलरली टेस्टिंग करने से with our medications, तो we'll be able to understand दवाई कैसे काम कर रहा है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, and it will help us to understand how to assess the condition of the patient and make changes in our medicines. So this becomes, and patient को भी confidence आ जाता है इसमें कि जब उनका values अच्छा होने लगेगा तो they also feel better, happy about it. तो it's always a very important thing. And documentation, तो वो बहुत easy हो जाता है to understand, to make sure studies के ऊपर कौन सा दवाई काफी काम किया है. It helps in your own research. So your own clinic is your research center. So now over the years, there have been many medicines I have used. Now, apart from our, now many a times in our busy practice, क्या हो जाता है, we'll not be able to, many a times we would not be able to keep up to all our cardinal principles, go completely into where we go in for complete analysis and find out a symptom. Sometimes try to use our therapeutics which we have with our repertories, and so we'll be able to help. So वो books की वजह से we get an easy
number of medications, तो उसमें this all will help as research works and investigations are very important कि क्या हो रहा है। तो अगर T3 T4 कम है, TSH ज्यादा है, तो वो हाइपोथायराइड हो जाता है। अगर TSH माइनस में जा रहा है, so then it becomes hyperthyroid. So it's a completely a different condition or altogether. So diagnosis will change. Then, okay, so before I come to homeopathic approach, I want to finish the proper sign. So another important thing is whenever we study a condition, तो differential diagnosis बहुत जरूरी हो जाता है। So एक hypothyroid के condition में more important लक्षण क्या क्या है? Laziness हो जाता है, and we also understood about why the patient metabolism काफी low हो जाता है, joint pains, headache, hair fall, dry skin, ये सब common लक्षण है hypothyroidism। Similar condition हम लोग देखते हैं iron deficiency anemia में। So in that condition also there will be tiredness हो जाता है, hair fall हो जाता है, थकान हो जाता है, body pains आता है, periods का irregularity आता है। So it becomes important। मगर ये lab test करने से we get more clarity कि thyroid की problem है या hemoglobin की problem है, iron की problem है, vitamin D की problem है, vitamin B12 की problem है। So ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। So laboratory investigation करने से we'll understand कि क्या बीमारी की वजह से क्या लक्षण है, और differential diagnosis में it helps to understand or diagnose the condition easily. And apart from this, another common differential diagnosis what we can do is sleep apnea. अगर snoring, अगर पेशेंट ज्यादा खराटे मारते हैं तो स्लीप एपनिया बोलते हैं उसके लिए, तो जिसमें उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन नींद में काफी कम हो जाता है, सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। तो वो स्लीप एपनिया की वजह से डे उनका जब वो उठते हैं फ्रेश नहीं रहते हैं, एंड देन जो स्लीप एपनिया पेशेंट्स है काफी ओबेज रहते हैं, मोटे रहते हैं, तो वेट गेन हो जाता है, दे टायर्ड, स्लगिश, लो मेटाबॉलिज्म। तो ये सब कॉमन डायग्नोसिस होते हैं। सो सो लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस आर इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू इंडिविजुअलाइजेशन, तो homeopathy is an art and science. So we say an art is only because in our science, so we go more in detail. Now अभी तक मैंने जो बताया ये तो proper side हो गया, तो जिसमें हम लोग we just learned a little brief on physiology and pathology. तो homeopathy where we try to understand the patient, तो इसमें individual को study करते हैं, individual को separate out करते हैं काफी लोगों से। So for a homeopathic approach, individualization becomes very important. तो इसमें and we need to understand कि पेशेंट का मेंटल स्टेट कैसा, उनका टेम्परामेंट कैसा है, उनका इमोशनल स्टेट कैसा रहता है, just by our case taking. So that's why our case taking is very elaborate and it's an art. So in which we converse, so we spend time with our patient, so we develop a bond with our patients. ये बहुत जरूरी होता है पेशेंट और डॉक्टर के approach, and it becomes very easy so that the patient also feels comfortable and we can also understand the patient too. This is very important. So always try to be more open कि patient express करे तो उसके हिसाब से दवाई लें, and let's not try to add lot of uh, how do I put it? Direct questioning ज्यादा avoid करना चाहिए case taking के ऊपर। And then homeopathy, why homeopathy? Because homeopathy में हार्मोन डिपेंडेंसी नहीं रहता है and it is holistic, so we get better with it naturally. Okay. Now coming to our organ of medicine. Now case taking becomes very important, and aphorisms, Dr. Samuel Hahnemann has briefed us and explained very much in depth in aphorisms 83 to 99, a detailed history, both physical and mental conditions. So physical complaints, our sleep, yeah, motions, urine, एपिटाइट, तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है केस टेकिंग में। फिजिकल कंडीशंस में थर्मल्स, उनका जल्दी गर्मी लगता है या फिर जल्दी ठंडी लगना, सो थर्मल्स बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डिजायर्स, अवर्शंस, ये सब काफ़ी डिटेल्स में हमको केस टेकिंग लेना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू गेट अ सिमिलिमम जितना जल्दी हो सके। एंड देन मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, पेशेंट कैसे है, वो कैसे बात करते हैं, उनका गेट कैसा रहता है, हाउ द पेशेंट अप्रोचेस, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द पेशेंट व्हेन इज टॉकिंग टू यू। फोन में अगर टेली आई मीन इफ इट्स अ टेली कंसल्टेशन तो वो कैसे बात करते हैं,
how is his speech. Because many a times our practice is so very less time, so we need to capture जो जो चीजें patient express करते हैं, तो we need to be very keen observers. Because many a times we cannot sit and ask direct questions. You need to understand, assess, understand their body language कैसा रहता है, and try to make our notes accordingly, and more improvise as and how case taking जाता रहता है. Then totality of symptoms under aphorism 7. So we need to take a whole detailed totality with physicals, mentals, the bodily symptoms, जो हम लोग symptoms अभी अभी लक्षण we just went through about hypothyroidism के लक्षणों के बारे में कैसे रहता है. Those are the local symptoms. Apart from that, general symptoms जो भी मिलता है केस में. So all that put together एक totality होगा. तो उसके बाद we do our repertorization and then we get to a medicine. Then selection of a remedy. Now totality becomes the main guide and based on individual symptoms hoga, and then totality of the case. Follow up of the case. Now this is more important. कभी कभी क्या रहता है, after the the first follow up becomes very important and further follow ups में भी. तो follow ups में क्या है, first very important thyroid patients में there are, as I already told, दो तरीके के. कुछ लोगों को बहुत symptoms है, कुछ लोगों को symptom ही नहीं रहता है. They are very asymptomatic. तो ओनली थ्रू लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में हमको पता चलेगा कि अगर रेस्पॉन्स अच्छा हो रहा है, रीडिंग्स कम हो रहा है, सो इट कुड बी केस ऑफ ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस की कंडीशन. सो वेरी एसिम्प्टोमेटिक, ओनली एंटीबॉडीज काफी ज्यादा रहता है, एंड विथ फ्रीक्वेंट follow-ups we'll be able to understand and when to prescribe, how much to prescribe, कितना डोजेस करना है, अगर चेंजेस करना है तो उसमें पता चल जाता है. And of course, aphorism 272, most important, at any given point of time, एक single medicine की prescription, it is always better, so that we'll know, पता चल जाता है अगर दवाई काम किया है, अगर नहीं किया तो उसको changes करना easy हो जाता है. तो उसके हिसाब से we can make better prescriptions. Now that I've been practicing since a long time, it's not that every case, सभी case में we cannot do कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या फिर इंडिविजुअलाइजेशन, कंप्लीट टोटलिटी नहीं होता है. इट इज नॉट प्रैक्टिकल, नॉट ऑल केसेस एंड नॉट ऑल पेशेंट्स will be able to give you what you want as a homeopathic doctor. We need to understand and see case to case. So we need to have all our weapons open. 10 होंगे तो 10 तरीके की प्रैक्टिस होना चाहिए. So whenever possible, get your similima. If not, try to go to the nearest similima and work on the case accordingly. Because I'll explain it as I go ahead in the further slides. Now coming to the therapeutics aspect. So ये तो सबको पता है, our therapeutics and our repertories, these are the common medicines which we use for, which has an action on thyroid gland. So most commonly used medicines: iodine, thyroidinum, natriumur, phosphorus, and so these are the common group of medicines which have a very sphere of action on thyroid gland. And then काफी cases of जिसमें thyroid enlargement होगा, where there is increased vascularity, or sometimes in goiter, I've used lapis alba. Lapis alba has helped in number of cases of mine. Now lapis alba, when you do a इंडिविजुअल रेपर्टराइजेशन का, तो लैपिस एल्बा नहीं आ सकता है. रेपर्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ आएगा या आयोडम आएगा या फिर आर्सेनिक एल्बा आएगा, नक्सोमिका, natriumur, phosphorus, because these are polycrests which have been detailed, and our repertories are built with those medicines because they have been the proving has been done more in depth. But many of other medicines which are there in our Metra Medica and our repertory, and we have to sometimes use these medicines and see, and it also has a very wonderful action. This also we study through Borix Metra Medica or through Clark's Metra Medica, so which I generally use as my source books में. And काफी cases में सिर्फ hair fall था. So hair fall एक लक्षण था काफी thyroid cases में, उनमें TSH वेरिएशन होगा या फिर सिर्फ हेयर फॉल, हेयर में काफी ड्राइनेस है, या फिर सो फॉर हेयर थिनिंग हो जाता है. तो thallium met is one of the most commonly used medicines in my practice
तो सिर्फ थैलियम मेट देने से उनका हेयर स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, and the hair growth has been better. So this has been my practice over time. So I've used them, and काफी glandular when it is more on the nodule aspect. If it is more on the left side, तो chromium काफी use किया है मैंने, and then conium I have used in many cases of nodules of goiter. Again, it is a glandular medicine. And then spongia has been used in many of the goiters condition with hypothyroidism. Though nowadays we don't see so many, at least in my practice in Bangalore, because Bangalore ka geographical distribution, it's not that where we see too many goiter cases, because it's a developed, it's a metro city. So here you don't see iodine deficiency. Iodine deficiency utna nahi rehta hai, so it's a very developed city. So we don't see so many iodine deficiency goiters, but we do see multinodular goiters काफी देखते हैं. So in those cases, I have used mother tinctures like Fucus Swiss in quite a few cases, and काफी results आए हैं उसमें. Calcare iode is one of the commonly used prescriptions of mine in treating conditions where there have been enlargement in the thyroid gland and with TSH variations. And many of the cases over the time, uh, when I have used, these regular medicines of iodine or natrium or phosphorus, काफी केसेस में सुधार आ जाता है, TSH भी अच्छा कम हो जाता है कुछ महीने में ही. And there are few cases, the patients would have also been taking thyronorm या फिर thyroxine medications, जो एलोपैथी के हार्मोन मेडिसिन लेते रहेंगे, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग केसेस, क्रॉनिक केसेस वो भी आते हैं क्लिनिक में, जो दे वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेडिकेशंस. और तो व्हेन दे स्टार्ट आवर मेडिसिन, हम धीरे 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 वो हार्मोन मेडिसिन कम करते जाएंगे एंड पैरेलली वर्क विद आवर प्रिस्क्रिप्शन सो दैट दे शुड come out of medication. Because when you suddenly stop a hormonal medication, there will be too much of variations. Over 15 years, I've done so many things. I've suddenly stopped medicines. I've done too many permutation combination. काफी changes हुए practice में. It's not that I've been doing this now. Because my clinic is one of the oldest clinics in Bangalore, so so there are a lot of patients and which come with thyroid, so it's tough. So kafi, I don't get too much of time to give to a case, but many a times I have used these medicines and I've had wonderful results. And very importantly, many a times Kali group of medicines I've had very good results with them. Even if you open Clark Metromedica, when you open Kali Carb, so he says hypothyroid. When you open Natrimer, he says hyperthyroid. So when you open Thaliometin, Boric Metromedica, he says spear of action on thyroid gland. You open Irisfor, he says spear of action on thyroid gland. So our Metromedica is not built in a way where it is going to give you that, yes, for this. So there's no mathematics homeopathy. It's just over your practice, over time, you get that understanding, and so you can use these prescription. Now, thyroxinum is one of the new prescription which I've been using of late. Kafi cases mein, no, so I use them in few cases, and then wherever thyroid variation वो कम हो जाता है, मगर फिर से it starts increasing. So in between I use miasmatic medicines या फिर thyroidinum या thyroxinum in between, and case comes under control. Now remedy selection is again based, I have already explained, and all this already बात कर चुका हूँ, temperaments and miasmatic. हाँ, मेरे clinic में I use a lot of temperaments, so my prescription is based a lot on temperaments. Why I started temperaments? क्योंकि my students life maybe when I started my initial years of practice, so it was easy for me to temperament was like again like a therapeutic. तो specific temperaments में group of medicines है, तो patient के साथ थोड़ी देर बात करने से पता चल जाता है कि क्या temperament project कर रहे हैं, to an extent एक idea आ जाता है. तो उसके हिसाब से there are group of medicines, वो group of medicines में I try to understand more in detail and match the medicine accordingly. So temperament becomes a very easy way in which I have been practicing. I just told you there are different ways in which people practice. कुछ लोग mother teacher में practice, कुछ लोग biochemic में practice करते हैं, कुछ लोग
हम ओनली कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं. सो यू हैव टू बी ओपन विथ ऑल काइंड्स ऑफ ways in which you can practice, so that end of the day the patient has to get the benefit, you have to be benefited end of the day. And temperaments is a mental state in which it is instinctive nature है, तो ये immediate changes नहीं होता है. So it is instinctive, it's an immediate reflex of a person. So person अगर गुस्सा आता है तो immediate गुस्सा दिखाता है. If is a person वो lazy है, आलसी है, तो is immediately वो दिखता है phlegmatic, वो it is very easily portrayed on in their actions, in their talk, in their speech. You get to understand वो introvert है, extrovert है, बात ज्यादा बात करते, कम बात करते, mood swings हैं, तो you can understand temperaments very easily, and with a group of medicines your practice becomes very easy. Now coming to one of the common cases. Now cases, everyone, now hyperthyroid is so common that everyone has been treating thyroid, so there's nothing out of the way in thyroid cases. So that is why I was stressing more on the conditions where our practice we need to be open to understand how we can prescribe, what we can prescribe, when to prescribe. Now, like I explained, in few cases which I've used lapis, alba, and lycopus in conditions of goitrous conditions. Now, in few cases where I have been able to achieve the simillimum, the results have been fantastic. When I've used when I've used medicines which have been more, I won't put it as specifics, but which has a sphere of action on thyroid gland. So when I've used those medicines, तो the treatment methodology या फिर जो follow-ups और जो progress आता है केस में, वो थोड़ा समय लेता है. मगर जो सिमिलिमम जब हम लोग मैच कर लेते हैं, वो एकदम फास्ट हो जाता है. You can see the results very fast, the recovery is very fast, and the patient is also benefited very fast. So that is one thing. So, but like I said, सभी केस में नहीं हो सकता. Wherever possible, I've been able to achieve that, and those are one of those cases. So this person is a chief finance officer in one of those IT companies in Bangalore. तो उनका मेन वजह आना मेरे क्लिनिक में हेयर फॉल के लिए. तो जब हेयर फॉल के बारे में, बिकॉज ही वॉज रेफर्ड टू हिज बाय हिज फ्रेंड, जो उनको अभी हेयर फॉल का तकलीफ था, वो हेयर फॉल के लिए आए थे. तो जब टेलीफोन में उनका कंसल्टेशन हुआ तो मैंने बताया कि काफी हेयर फॉल आ रहा है. तो उन्होंने बताया सर थोड़ा थकान हो रहा है, वजन भी काफी बढ़ रहा है आजकल, तो एक बार थायराइड चेक करा लीजिए, देख लेंगे अगर कुछ है तो. सो दिस वाज अ फ्रेश केस ऑफ थायराइड. उनको it was not priorly medicated by allopathic medications. So when he got to know, he was shocked कि उनका reading 124 था. I said it is nothing uncommon. आजकल काफी cases में we have see readings of TSH going about 200 and all. So it's nothing uncommon. And the panic आजकल, वही मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर की एंजाइटी कितना हो जाता है कि TSH का लेवल 5, 6, 7, थोड़ा वेरिएशन में भी दवाई शुरू कर लेते हैं. In fact, though our books they mention that TSH level less than 4, less than 5 is normal, मगर subclinical, there is always subclinical till 10. Subclinical cases respond by itself, get corrected by itself. And काफी conditions आजकल है psychosomatic. ये सब आजकल जो केसेस आते हैं सिर्फ TSH वेरिएशन है, T3, T4 नॉर्मल रहते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन इट इज ऑल साइकोसोमेटिक. जैसे उनको पता चल जाता है उनको थायराइड में TSH वेरिएशन है, गूगल में पढ़ देते हैं सभी सिम्टम्स, मेरे को है सभी सिम्टम्स. सो इट ऑल बिकम साइकोसोमेटिक उनके अंदर. सो इट इज एंड इट इज समथिंग आजकल, बिकॉज पीपल आर अवेयर. आजकल इंस्टाग्राम में थायराइड के बारे में एक इतना पोस्ट आते हैं. So everyone knows everything. It's not something new. Magar, as soon as they come to know something is wrong in their blood report, they start believing, they start assuming, पूरा delusions में आ जाते हैं कि उनके अंदर बहुत बड़ी बीमारी है. So that is very important, where we need to understand the patient. So this patient was very talkative. बहुत बात करते हैं. अभी मैं बात कर रहा हूँ मगर मेरा नेचर है, I am not very talkative. So this patient was conversing. तो टेलीकंसल्टेशन हुआ. टेलीकंसल्ट में इंस्टेड ऑफ 1 or 2 मिनट्स काफी 15 मिनट तक बात की उन्होंने. मैं तो इधर वॉच देखते देखते रह गया, अगर ये कितना बात करेंगे, अभी तो पहले क्लिनिक पे आने दे, उसके बाद तो केस होगा, उसके बाद दवाई होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा. ये तो फोन में ही इतना बात करना शुरू कर दें.
तो first thing पता चला. Then so this is how you understand the case. So as soon as he comes, then how he sits, how he greets you, there's a social smile. So this is how you understand. So gait of the patient, body language of the patient बहुत जरूरी होता है. इसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि body language बहुत जरूरी होता है जैसे patient आते हैं. And then of course our case taking के ऊपर, as I started taking more of his case, he came under the sanguine temperament. So after that, keeping his symptoms of hair fall, gaining weight, and tiredness, and then all these put together, repertorization हुआ. उसके बाद phosphorus was the medicine which was prescribed. So phosphorus I gave for about 6 days, and then important is T4 is low. So like I told you, hypothyroid में TSH is increased, T4 and T3 is low. So not all cases should have everything. And then for the follow-ups, after a month, his TSH came down to 32, and then for the follow-ups, it came down to 4.97, and then further in June, he's fine. So now almost from April, he's not on medicine. Now I've told him to repeat. I've stopped his medicine from June, and I've told him to repeat another test in August, but he's not got back. So if he's going to do the test now, I've told him not to take any medicine. I've stopped my medicine. Last was in June, which I gave him. उसके बाद अभी तक let's see what his result is going to be. अगर ठीक है तो that's all best. And then so this was his reading, his lab report. So it was his T4 was low, his TSH was high. All this. हाँ, और ये भी pink salt के he was always on pink salt organic. From the last 1 year he has started taking pink salt more organic. ये सब आजकल बैंगलोर मेट्रो सिटीज में काफी कॉमन हो चुका है. So सब लोग ऑर्गेनिक चाहते हैं. एंड पिंक सॉल्ट, नो आयोडाइज सॉल्ट, कंप्लीट नो आयोडाइज सॉल्ट. तो कंप्लीट नो आयोडाइज सॉल्ट की वजह से भी ये वेरिएशन हो सकता है. तो as soon as I got to know, I asked these questions. What are you eating? What is this? So we need to correct them, and accordingly the case gets better faster. So right, and it's not that for every case we need to say चाय मत पीजिए, कॉफी मत पीजिए, ऑनियन मत लीजिए, प्याज मत खाइए. More than all that, we need to guide them on the right food, the right kind of vegetables they have to eat, not eat. Their food and diet is more important. वो ठीक करने से, दवाई देने से, everything gets better. Many a times food and lifestyle changes only cures the condition. This is another case. She's a lady and very, very busy nature unka. And so this lady came to the clinic. So she's an administrative. So basically she runs a company of hers. तो उनका मेन प्रॉब्लम आया था पीरियड्स इरेगुलर की वजह से आए थे. तो आफ्टर आई फाउंड आउट, शी टोल्ड मी उनको थायराइड है और थायराइड 8 साल से. तो शी वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट हर थायराइड. वो तो है 8 साल से है, वो तो दवाई थायरानॉम लेते हैं, कभी नहीं लेते. बिजी हो गए तो छूट जाता है, कभी आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं तो 10 दिन 15 दिन नहीं लेते, उसके बाद बीच में लेते. तो शी वाज नॉट वेरी रेगुलर ऑन हर मेडिसिन आल्सो. बट one thing very commonly, she had irregular menses and headache. So more important was unko, so she came to me because she was bored and tired of taking regesterone tablet. So the medicines, so she was on this 21 days tablet in between, but then she had stopped all that from last 6 months. In fact, she has not been on any medication except Tylenol, that also on and off. So she said she's been too busy in her work, and then it's not sleeping very well. She's been having too much of headaches, काफी ज्यादा है. तो headaches एकदम वो हैमरिंग थ्रॉबिंग सेंसेशन जैसा हेडेक आ रहा है उनको, उल्टी करने जैसा होता है. और ये पीरियड्स के समय पे काफी हेडेक भी आ जाता है. And then because again food not eating properly, vegetable intake कम है, कब्ज की प्रॉब्लम है उनको. तो मोशन ठीक से साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस बन रहा है. So all these was causing her trouble. Her nature, she was quite an introvert. She was not very open initially. तो उसके बाद जैसे बात करने लगे तो उसके बाद थोड़ा और she started expressing about herself, and then she was more on the melancholic side of temperament, where she was very silent, but she's been achieving quite a lot of success. Has been very busy in her
So her talent has been very good, which is again a very strong rubric which comes under melancholic temperaments, and very focused on work. वो ये सब काफी वर्कोहलिक नेचर है melancholic temperaments. Punctual nature, which is also there. So she's, because she runs the company, उनके काफी वर्कर्स रहते हैं, तो चिल्लाना, जोर से बात करना, आवाज चली जाना, तो ये सब काफी लक्षण थे इनके केस में. So again, she came with her report of TSH, which was about 54, and T4 was high. तो natriumur after reporterization prescription हुआ था. तो उसके बाद उनका पीरियड्स जो डिले हुआ था, तो दवाई देने के 5 दिन के बाद उनका पीरियड्स हुआ, मगर पीरियड्स फिर भी काफी कम था. वो बहुत स्कैंटी मेंसेस था उनका, मगर हेडेक भी काफी बार आया था. मगर व्हाट शी वाज टेलिंग कि हेडेक की इंटेंसिटी काफी बेहतर थी. हेडेक जो फ्रीक्वेंसी भी है वो भी काफी कम हुआ था, मगर था. मगर जब बीच में एक बार हुआ था तो काफी तेज हेडेक हुआ था, तो उन्होंने बीच में नेक्सडॉम ले लिया. तो you can't stop people, because today people need to do work. For that, they cannot wait. So we have to be very fast, clear in our approach, so that we can give the fast relief to the patient, and patient is also benefited, we are also benefited. Very important. And then what the follow-ups, the menses, the next menstrual cycle, her, she had a lot of periods pain हुआ था, काफी clots हुए थे, and headache तो इस बार periods के समय पे नहीं हुआ था. And then medicine was prescribed, and then her TSH is better. So TSH is 54, later on it came down to 16, and then TSH is 2, and she has been fine. And since she was on and off on Theranom, तो इनके केस में मैंने तो फिलहाल, because she had not taken Theranom काफी 1-2 महीने से बराबर से नहीं लिए थे, तो I told her don't take it. So that was another reason it was easy for me to treat. But when I treat cases where we are taking allopathic and homeopathic, which is very common, you cannot deny about it. End of the day, we have to sometimes agree with the patient, you can't do anything about it. So go what best we can do at that time, and try to see how. So these are a few cases where I've been able to get the simillimum. So as I told you, many cases you cannot get. So sometimes you have to use common medicines like simple iodine. You have to give. Sometimes you need to give natriumur. The case comes under control. You see TSH. Once the patient sees उनका laboratory values जैसे थोड़ा कम हो जाता है, उनका भी confidence आ जाता है, डॉक्टर के ऊपर भी they feel better, they feel secure, they feel comfort. And then you can slowly in further follow-ups में उनका case taking और थोड़ा detail में लेके you can try to reach a nearer simillimum. This is something very important. Again, a small case of goiter. This was a case. It was a video consultation, teleconsultation, which happened in. She's in US. She's a student who's pursuing her MBA there. तो उनको एक she's a Bangalorean. तो Bangalore आए थे. She came with her report in which they had told they have to do biopsy first. काफी it was a small nodule, but it was very hard nodule था. तो डॉक्टर ने तो टायराइड्स 4 बताए थे, तो शी वाज स्कैर्ड. देन शी वेंट टू द बायोप्सी. तो बायोप्सी में तो नेगेटिव आया, तो बिनाइन नोडुलर goiter. And then so she was quite worried about it. More than her parents were worried, because the parents, they stay here in Bangalore, she stays alone in US. And another thing was, you in other countries, Western countries, they eat more of lettuce, broccoli, ये सब ज्यादा खाते हैं. Just these are more of cruciferous vegetables, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सब ज्यादा नहीं खाना है in these conditions, because it utilizes body iodine. ब्रोकली आज, पहले तो इंडिया में इट वाज ऑलवेज गोभी, फूल गोभी या पत्ता गोभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेते हैं. ब्रोकली इज समथिंग व्हिच nowadays everything has become, everything you get everywhere आजकल. तो it's nothing that यूएस से आता है या फिर ये इंडिया में नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है. आजकल तो सब यू गेट एवरीथिंग एवरीवेयर आजकल. बट those are vegetables which we don't eat very commonly घर में.
So she was, so I had to guide her on those things, of course. And then her nature wise, she was quite shrewd, her appetite was more. So all these, I started giving her iodine. So after iodine, that nodule, about close to about 3 centimeter, and then after when she came back in December, I told her to go for a scan, and in Jan she did a scan, and then that is now there is no nodule now, so nodule is cleared. So our medicines are fantastic. It's just that we need to have one, we need to explain the patient very well. We need to explain कि पेशेंस होना चाहिए पहले डॉक्टर के अंदर. डॉक्टर को कभी एंग्जाइटी नहीं दिखाना चाहिए. एंग्जाइटी के, नॉट फॉर दैट यू डोंट नो एनीथिंग, मगर एंग्जाइटी की दवाई कब शुरू करना है, कितना शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, दैट वो जानकारी बहुत जरूरी होता है. एंड थायराइडिज्म इज क्रॉनिक बट इट इज वेरी मच ट्रीटेबल होम्योपैथी में. एंड देन वी एड्रेस द रूट कॉज. वी अंडरस्टैंड क्या रूट कॉज क्या होता है. ये सब लोग बात करते हैं कि रूट कॉज. ये रूट कॉज क्या है? रूट कॉज वो पर्सन का लाइफ स्पेस, वो पर्सन का अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई दैट पर्सन इज हैविंग दैट प्रॉब्लम, वो वजह से, उनके लाइफस्टाइल की वजह से, उनकी जो प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री हो सकता है, या फिर उनका डिसीज हिस्ट्री हो सकता है, क्या माइस्मेटिक हिस्ट्री हो सकता है, उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम क्यों आया. सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथी. इसमें एक्सेल करता है. एंड देन केस टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन इंडिविजुअलाइजेशन, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं उसके ऊपर. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ours is hormone free. So that is the best thing which a patient can always, as soon as patient सुनते हैं कि हाँ होम्योपैथी में तो हार्मोनी नहीं यूज करते, तो सिंपल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, एनीथिंग अंडर द सन इज मेडिसिन इन होम्योपैथी. So that is the wonderful science that we have in our hand, and we should utilize this, and we should give the best justice to the patient. So this is something very, very important. And a few references which I have used is Borex, Kent's repertory, and I also use my Clark Mathematica. That is my book, my main source book which I use, and then these are the other things which I have used in my. So this is how I've been practicing hypothyroidism, and thank you, धन्यवाद पेशेंट हियरिंग के लिए. एंड माफी चाहता हूँ कि बीच बीच में काफी अंग्रेजी शब्द हुए थे, बिकॉज आई एम, एज आई टोल्ड, आई एम अ बैंगलोर, आई एम नॉट वेरी मच वेल वर्स्ड इन हिंदी, बट कोशिश यही कि काफी हद तक मैं हिंदी में ही बात कर सकता हूँ. नहीं, नो नो डॉक्टर रोहित, इट वाज ग्रेट. बहुत Thank अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका. इट्स ओके, लैंग्वेज प्रॉब्लम कई बार yeah, it's होता just है, that. पर Thank आप अपनी बात अच्छे से कह पा रहे थे, एंड thank बस you. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो Yeah. वंडरफुल सेशन. काफी अपने डिटेल में बताया और केसेस भी प्रेजेंट किए. केसेस प्रोवाइड्स, मतलब केसेस जो है हमें इंसाइट देते हैं कि किस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही हेल्प करती है. जस्ट यही निकल के आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इज द आंसर टू एवरीथिंग. आप पर्टिकुलरली कितने भी पर्टिकुलर वो दे दो, मदर टिंचर दे दो, वो टेम्पररी रिलीफ देते हैं. वो आपको रिजल्ट शुरू में बहुत अच्छे दे देंगे, पर इन द लॉन्ग रन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही आपकी मदद को आता है. तो आपका काफी अच्छा सेशन था. किसी के कोई क्वेश्चंस हो यहाँ पे तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या डॉक्टर रोहित से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? क्योंकि अभी हमारे पास 5-6 मिनट्स बचे हैं लास्ट के. हाँ जी, डॉक्टर राम परवेश शाह सर, बताइए. Thank you, Neha Kakkar, and congratulations, Dr. Rohit Srivastava. Very good explanation. Hypothyroidism cause, the very important root cause, electrical disbalance. Electrical disbalance root cause. Sun rays, water, and air. अभी जो है वातावरण है कि हम लोग हमेशा जूता पहने हुए रहते हैं, जमीन पर पैर नहीं रखते हैं, है ना. जल में थोड़ा देरी के लिए स्नान करते हैं तो पैर जल से धोते हैं. सनरेज नहीं मिल पाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है.
तो इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस देन केमिकल डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, हार्मोन, इमोशनल एंजाइटी, ग्रीफ, इटिसी, और केमिकल डिस्टर्बेंस आफ्टर जो है बीमारी का जो है जड़ हो जाता है, फिर हमारा जो है हर तरह का बीमारी जो है पकड़ लेता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज द रूट कॉज इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस। यस सर। और lot of medicine deals the and according to constitutional, according to miasmatical we according to there are 3 angle treatment. First angle, symptomatical angle is the very good important, है ना, and second जो है miasmatical angle, and third जो है pathological angle. तो homeopathic there are 3 angle of treatment, अपने अपने डॉक्टर अपने हिसाब। थैंक यू डॉक्टर रोहित। डॉक्टर शाह सर, ये डॉक्टर तारिक भी पूछना चाह रहे हैं, ये किस चीज की आप समरी पूछ रहे हैं डॉक्टर तारिक? हेलो डॉक्टर तारिक। आई डोंट नो वो किस चीज की समरी पूछ रहे हैं, या तो पूरे वेबिनार की समरी पूछ रहे हैं। वेबिनार की समरी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनली और विद इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट कर सकते हैं, आई गेस। और किस चीज की समरी पूछ रहे हैं, आई डोंट नो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पूछ सकते हैं प्लीज। ओके डॉक्टर रोहित, इसमें आपने जैसे बताया 200 पोटेंसी, तो यू यूज मोर हायर पोटेंसीज आल्सो 1M? हाँ 1M भी यूज करते हैं। 1M 10M, और इवन आपने LM पोटेंसी भी यूज करी है कुछ केसेस में? नहीं, आई डोंट यूज LM potencies मच प्रैक्टिस में, मगर काफी आई यूज 201 potencies only more। ओके ओके ओके, उसी से रिजल्ट आ रहा है आ ना? जाते हैं। ओके, ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली पोटेंसी इज एन डिफरेंट टॉपिक हियर, बट अगर आपका सिमिलिमम मैच कर रहा है तो पोटेंसी कोई सी भी हिट कर जाती है। सिमिलिमम मैच करना बहुत जरूरी है, तो इवन 200 पोटेंसी कैन गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। बिकॉज दिस इज अगेन अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन ना, तो यस फिजियोलॉजिकल कंडीशन यस, में तो ऑब्वियसली यस, फिजियोलॉजिकल डोजेस लोअर पोटेंसीज, लोअर यस कम ऑब्वियसली, कर देता है जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay. Any other specific medicines do you use in hypothyroidism? Adjuvant specific or biochemic medicines? Biochemic, of course, again, natrium 6x and then natrium phos 6x, Kali phos, again, Kali phos 6x in cases where there's a lot of stress oriented, नींद Okay. हो जाता है। Okay. And Kali group in general, Kali group is patient where there's a lot of work and family life dysfunction which is there, तो उसमें काफी cases तो आ जाते हैं। तो patient तो very Kali group is a very wonderful person, आजकल एक्सप्रेसिव, हाइपोथायराइडिज्म, हाँ जी, घर में ज्यादा लेट, एक्सप्रेस नहीं करते, बाहर एक्सप्रेस करते, घर में अंदर ही अंदर रहते हैं, रूटीनिस्ट होते हैं। आई गेस यही रीजन है, लेडीज में बहुत थायराइड डिसऑर्डर्स देखने को थायराइड हाँ मिलते हैं। काफी लेडीज में है और काफी हाँ जी, टीचर्स में है। दैट इज वन ऑफ माय अदर रिसर्च व्हिच आई हैव डन। ड्यू सो टू, या इट्स काफी ड्यू टू टीचर्स में थायराइड पाए जाते erratic हैं। life space lifestyles is also causing this. Yes. So obviously lifestyle is a thyroid disorders is a lifestyle disorder, मोर तो ऑफ लाइफस्टाइल ओनली आजकल तो। yes yes, इतना स्ट्रेस है और इतना इराटिक है, यू डोंट हैव योर मील टाइम्स एट रेगुलर टाइम्स। मील्स आप अगर रेगुलर नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, तो भी थायराइड डिसऑर्डर्स आने के चांसेस रहते हैं, डायबिटीज आने का चांस रहता है। मोस्टली पीपल skip breakfast, yes. So this was all about hypothyroidism with Dr. Rohit Srivatsan. Thank you so And I much, would like to Dr. Rohit. thank everyone, and special I would like to thank Dr. M.K. Sani sir. So Yes, sir. so He's give me not this coming from 2 days. opportunity. I don't know. He must be busy somewhere.
I would like to Yes. thank Sani sir for giving me this opportunity under this wonderful platform, IFPH. Yes. And thank you, Neha ma'am, and thank you Yes. everyone for your patient hearing. Yeah, Both we hope Dhanyavad. to see you more with other topics. Thank you so much. Thank you. Yeah. तो हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है और इंग्लिश सेशन के लिए आई हैंड ओवर टू डॉक्टर धनेश. थैंक यू.